Hi, this lecture is going to provide an introduction to trademarks. So in another video, I have provided a lot of examples of what trademarks look like in practice. So if you want to look at examples of trademarks, please watch that other video. अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ आईपी की बात की थी कि किस किस तरह के आईपी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मैंने कॉपीराइट पेटेंट्स भी डिस्कस किए थे, उसमें मैं मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ट्रेडमार्क का मतलब सिंपली ये होता है कि आप एक ऐसा मार्क इस्तेमाल करें अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल करने में ताकि आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे कस्टमर की, कंज्यूमर की नज़र में, यानी कि अपने ट्रेड में, अपने तिजारत में इस्तेमाल किए जाने वाला मार्क सिंपली क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क बाय द वे सिंपली इस तरह से एक प्रोडक्ट, एक गुड को इंडिविजुअलाइज करता है, बाय द वे सर्विस भी हो सकती है, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनल यूनिक आइडेंटिटी होती है। नोबडी इज़ सेम, राइट? वी आर ऑल डिफरेंट इन वन वे और दी अदर। सो इसी तरह से प्रोडक्ट्स को भी डिफ्रेंशिएट करने में ये ख़ास तौर पर तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब एक ही तरह के बहुत सारे, आप साबुन की एग्जांपल ले लें, सर्फ की एग्जांपल ले लें, वॉशिंग पाउडर, वट एवर यू just look around yourself, you see so many products, be it the shampoo you use or the mobile phone you're using, हर टाइप की प्रोडक्ट में बहुत सारे अवेलेबल ब्रांड्स होते हैं जिसमें से कि आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड्स हों, विदाउट ब्रांड्स भी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट पॉइंट ये है कि वैरायटी बहुत सारी होती है। लेकिन जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लॉन्च करने के लिए प्लान करते हैं तो यूजुअली आप ये सोचते हैं कि कोई ना कोई मार्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कंज्यूमर की नज़र में आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना भी इजी हो और स्टैंड आउट भी करे, एंड इजीली कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को आपके लोगो, आपके मार्क के साथ, बाय द वे लोगो के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। ट्रेडमार्क में ज़रूरी नहीं है मार्क सिर्फ लोगो ही हो। ट्रेडमार्क कैन ऑल्सो बी सिंपली योर ट्रेड नेम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ अदर वेरियस मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में शेयर किया, आप बहुत सारे स्लोगन्स इस्तेमाल कर सकते हैं विथ योर ट्रेड नेम। उन स्लोगन्स को हम टैग लाइन या स्ट्रैप लाइन कहते हैं। एंड बाय द वे दिस कैन टेक अ वेराइटी। आप सिंपली मैकडोनल्ड्स का देख लें, सिर्फ लेटर M इज़ देयर मेन ट्रेडमार्क। तो एंड बाय द वे दे ऑल्सो हैव अ टैग लाइन। पॉइंट ये है कि ट्रेडमार्क आप हमेशा एक अपने प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट, अ ट्रेडमार्क इज़ एनी साइन, दैट इज़ एनी मार्क दैट helps you to individualize your goods or services from the goods or services of your competitors, that is those other competitors that are also selling the same type of goods or services in the market. And by the way, it doesn't necessarily have to be the same type. In any case, your trademark helps to individualize your product in the market. So formally defining a trademark as it is defined in section 2 of the Trademarks Ordinance 2001, a trademark is defined simply as any mark capable of being represented graphically, which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. By the way, undertakings का यहाँ पे simply मतलब है it can be a business, and don't get confused by this word. It simply means other enterprises, other entrepreneurs, or simply other businesses. ठीक है? तो एक business को दूसरे business से जब अपने product को distinguish करना है, अपने goods और services को distinguish करना है, तो वो trademark का इस्तेमाल करते हैं। And इस definition में by the way जो ये 2-3 terms थे, any mark capable of being represented graphically, ब्ला ब्ला ब्ला, तो याद रखें कि ये जो सारे टर्म्स हैं इनकी भी फर्दर डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, मार्क क्या होता है, व्हाट काउंट्स एज अ मार्क, इसकी भी फर्दर डेफिनेशन एक्ट में अवेलेबल है। एंड फॉर्मल डेफिनेशन बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि मैं आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड नॉर्मली जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशन के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनकी फर्दर डेफिनेशंस भी एक्ट में मौजूद होती हैं हमेशा। एंड दिस गोज़ फॉर एनी लॉ सब्जेक्ट। बाय द वे, अगर आप LLB के स्टूडेंट नहीं हैं तो यू माइट नॉट नो दिस, बट दिस गोज़ फॉर एनी लॉ सब्जेक्ट। सो इस डेफिनेशन में भी जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, की टर्म्स, फॉर एग्जांपल एक और की टर्म है इसमें डिस्टिंग्विश। ठीक है, डिस्टिंग्विश से क्या मुराद है, इसके ऊपर भी फर्दर एलैबोरेशन है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करना, सिंपली दैट्स द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। ठीक है। अच्छा, मार्क का मैं आपसे बता रही थी कि एक्ट के मुताबिक मार्क इंक्लूड्स एनी ब्रांड,
heading, label, ticket, it can be a personal name, it can be a signature, it can be just a letter like the McDonald's ka M, it can be a word, it can be a number, it can be the shape of the goods, it can be the packaging of the goods, or it can even sometimes be a color. By the way, this is a little bit controversial. Dairy Milk का जो purple color है उसके ऊपर I'll talk about that in another video, but they were not successful with registering their color. They were initially successful, but later on they lost the case. So and once again, taste a controversial trademark है because people did try to get it registered but they couldn't. I have mentioned this case in class, but it's not important. Just remember that some trademarks are very well settled but some are not. अच्छा, अब ये जो मैंने डेफिनेशंस बहुत ही क्विकली रीड आउट की थी, इसकी वजह यह है कि आई डोंट रियली लाइक टू स्ट्रेस टू मच ऑन द मेमोराइजेशन पार्ट. ये डेफिनेशन आपको एक्ट में इजीली मिल जाएंगी, गूगल से मिल जाएंगी. मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ. एंड अब जो मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ कि आप याद रखें कि अगर एक कंपनी ने, फॉर एग्जांपल कोको कोला इज़ अ कंपनी, राइट, एंड दिस ट्रेडमार्क एग्जिस्ट्स फॉर a kind of soda. So for example, I want to launch a product that is nowhere similar to a soda. Let's say it's a shoe, ठीक है, एक जूता बेच रही हूँ एंड मैं इसके अंदर यही ट्रेडमार्क कोको कोला वाला यूज़ करने की कोशिश करती हूँ. There is a chance that in some way or the other they might not let me use it, but most probably I can use it. Why? Because Coca-Cola is being used as a trademark for a soda, and as a shoe maker or as a shoe seller, I'm not going to be in direct or indirect competition, in any sort of competition with that company. And by the way, this is the reasoning behind the rule. The rule that you just need to remember, even if you don't understand the reason behind it, is that just because one company has a trademark already registered with a certain kind of good or service, किसी एक company ने, for example, like I gave the example of Coca-Cola, एक और example मैं आपको देती हूँ. For example, आप ले लें Apple company का Mac जो product होता है, तो Mac for example Apple ने register करवाया है already. It's a registered trademark, MAC Mac की बात कर रही हूँ, and this is not the McDonald's वाला Mac please. तो अगर for example कोई कंप्यूटर सेल करना चाहता है तो उसके लिए कंप्यूटर, by the way, it can be a computer operating system, it can be anything that relates to a computer. Your product can be a computer system, a computer or an operating system software. इन तीनों में से अगर आपका प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो उस प्रोडक्ट का नाम आप मैक नहीं रख सकते, आप अपना ट्रेडमार्क मैक नहीं रख सकते, बिकॉज मैक ऑलरेडी इस टाइप के यानी कि कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. लेकिन अगर आप एक सिंपली फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बेचना शुरू कर दें और उसमें आपने अपना ट्रेडमार्क रख दिया मैक, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी. वाई? बिकॉज ऑलरेडी जो एक ट्रेडमार्क एग्जिस्ट कर रहा है मैक, वो किसी और टाइप की गुड या सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है. ओके, सो होपफुली आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडमार्क बहुत सारी वेराइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं. इट कैन बी अ वर्ड, और दूसरी वीडियो में जहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेजेस भी होते हैं यूज़ एज अ ट्रेडमार्क, जिनको कि हम स्लोगन्स या टैग लाइन भी कहते हैं. तो ट्रेडमार्क की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. एंड ऑफ कोर्स the main take-home message is that when most of us think of trademarks, we usually tend to think of brand names like Coca-Cola, Apple or McDonald's or KFC. Of course, these are very good examples, but remember that the trademark category is very broad and it includes lots of varieties of marks, and the examples that I have shared in another video where I exclusively share examples of trademarks, you can look at that video if you want to. But in this video, the other important message is that a trademark, for example, आप PC होटल का नाम ले लें, so it stops other hotel chains from using the same name, that is Pearl Continental PC. And for example, Coca-Cola का trademark exist करता है because it is used for a soda. So there can be only one soda company called Coca-Cola, and nobody can start a soda company which has the same trademark, that is Coca-Cola. इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फ़ोन सेल कर रही हैं, बस आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम मैक के नाम से सेल नहीं कर सकते, एप्पल के नाम से सेल नहीं कर सकते. एंड इस तरह से कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं जो कॉफ़ी सेल कर रहे हैं, लेकिन वी ओनली हैव वन स्टारबक्स, वी कांट हैव मोर देन वन स्टारबक्स विच इज़ सेलिंग कॉफ़ी. सो जस्ट रिमेंबर दैट वंस अ ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड, तो आप उसको उसी सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ नहीं कर सकते.
So to repeat this point very slowly because it's so important, just because one company has a trademark for one type of good or service, that is for one type of product, let's say, that doesn't mean that another company cannot use the same name for a different type of product, that is for a different type of good or service. Because याद रखें कि trademarks also exist for services, by the way. That's just called a service name instead of a trade name. I do talk about this in a moment, but for now I hope this very important point is already clear to you. So one last example relating to this point is, for example, I start selling burgers. I obviously cannot use the name McDonald's because it's already registered as a trademark for burgers and of course other kinds of food that McDonald's sells. But remember that I can use McDonald's for a product that is in no way related to burgers or food. For example, I'm selling, let's say, jewelry, and jewelry has got no sort of connection with burgers or any other food product that McDonald's sells, right? So I can use that same trade name, same trademark for another type of product, and that's pretty much it about this particular point. I think I have repeated it quite a few times already, and I just hope that it's clear to you because it's such an important point. Actually, the other point that I wanted to talk about is the difference between trademarks and copyright. So in the video where I share lots of examples of trademarks, I have mentioned towards the end of the video that you need to think about the fact that we have already looked at copyright law, and we are aware of the fact that if somebody writes something, by the way, copyright mein paintings, music, lyrics, song lyrics, all of that is also included obviously in copyright, but predominantly, mainly जो books वगैरह होती हैं, जो authors लिखते हैं, articles हो गए, तो those kinds of that kind of content is usually covered by copyright, right? That is something that somebody writes is covered by copyright. तो अब इस पॉइंट से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन ये होती है कि ट्रेडमार्क तो चलो समझ आता है कि यूजुअली एक सिंबल, कोई लेटर, कोई लोगो, कोई डिज़ाइन कुछ होती है. इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम. बट आजकल स्लोगन्स जो हम टैग लाइन फ्रेजेस जो मैंने उस वीडियो में एग्जांपल्स शेयर किए हैं वो बहुत कॉमनली हम देखते हैं. यूजुअली हर प्रोडक्ट के साथ एक टैग लाइन होती है, स्पेशली जो द बिगर ब्रांड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल एप्पल का है थिंक डिफरेंट, एंड इन दैट वीडियो आई हैव शेयर्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच टैग लाइन्स. तो ये भी तो एक राइटिंग है, इट्स अ फ्रेज, राइट? It's a written form of a message. So just remember that ये भी trademark होता है, ना कि copyright में आता है. Why? Because रीज़न बहुत ही सिंपल है कि आप पर्पस देखें. ये टैग लाइन, ये फ्रेज़, ये स्लोगन इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हो रहा है? क्या ये किसी का इस पर्पस के लिए हो रहा है कि ये कहीं पे बुक की फॉर्म में इसको सेल करे? ऑफ कोर्स नॉट. इट्स मेंट टू सर्व एज अ डिस्टिंग्विशिंग लाइन फॉर योर प्रोडक्ट, राइट, फॉर योर गुड्स और सर्विसेज. तो जब किसी भी एक लाइन का, एक फ्रेज़ का, छोटा सा जो फ्रेज़ होता है बेसिकली टैग लाइन या एडवर्टाइजिंग स्लोगन, तो उसका पर्पस अगर ये है कि वो आपको ट्रेड में प्रॉफिट करने में, प्रमोट करने में, एडवर्टाइज करने में हेल्प करे, तो ऑब्वियसली बात है जब उसका पर्पस है टू सर्व एज अ ट्रेडमार्क, तो आप उसको कॉपीराइट की तरह क्यों रजिस्टर करेंगे? सो इन शॉर्ट, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट स्लोली कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रेज़ देखते हैं रिटन फॉर्म में किसी ट्रेडमार्क के साथ, यानी कि प्रिंसिपल ट्रेडमार्क लोगो सिंबल के साथ, तो याद रखें कि वो फ्रेज़, वो टैग लाइन, वो एडवर्टाइजिंग स्लोगन भी ट्रेडमार्क ही काउंट होता है, बिकॉज उसका पर्पस होता है टू सर्व एज अ ट्रेडमार्क फॉर योर गुड्स और सर्विसेज. Right, I'm sorry this video was a bit longer than the other videos, but I thought to cover all these important points in just one video. Thank you so much for listening.